to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know that daily at 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis. जैसा कि आपको पता है कि Sunday से Thursday 11 बजे सुबह the Hindu analysis होता है. So we are here with you. I'll be discussing it in both the languages, both in English as well as in Hindi. English में भी मैं discuss कराऊंगा और हिंदी में भी. So do not take tension. So today is Wednesday and today is 28 September. आज 28 September Wednesday है और we are here with the Hindu analysis of today. Now let's start with the important articles. देखो एक जो main article थी ये वाली, this is political article, so we are not discussing the political article. This one is a little important article. It's a, you can say, Supreme Court says let EC Election Commission decide Shinde's claim on real Shiv Sena. So basically, I hope you are aware that there was a tussle going on within the Shiv Sena that which one is the original Shiv Sena. जैसे कि आपको पता होगा शिव सेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें टसल था कि कौन सा शिव सेना रियल वाला शिव सेना है ना. तो एक्चुअली उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय चुनाव आयोग अब इसको डिसाइड करेगा. Okay, that is what it says. Okay, so let me give you a brief history about it so that it will be easy for you to understand. देखो, so when we talk about Shiv Sena, it was originally founded by Bala Saheb Thackeray. It's a political party from Maharashtra, state of Maharashtra. ये एक political party है Maharashtra state की. Now, after his death, Shiv Sena was, or can say the head of Shiv Sena was actually Mr. Uddhav Thackeray, his son. So the son of Bala Saheb Thackeray, Uddhav Thackeray was the head of Shiv Sena. And in fact, he was the chief minister, I think from, as far as I remember, 2019 to 2022. I think June, somewhere around May, June. But what happened was the internal split happened within the party and Eknath Shinde group actually took majority of the MLAs and he became the chief minister on 30th June 2022. तो आपको ये बेसिक तो स्टोरी पता ही होगी कि क्या हुआ था कि शिव सेना इंटरनल स्प्लिट कर गई थी और एकनाथ शिंदे कैंप के पास ज्यादा एमएलए चले गए थे और वो फिर बीजेपी के साथ अलायंस करके he became the chief minister. So after doing alliance with BJP in Maharashtra, he became the chief minister. Now the tussle was actually which one is the real Shiv Sena, the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray or Shiv Sena led by Eknath Shinde, which is the real Shiv Sena. इसमें से real वाली Shiv Sena कौन सी है? So it was supposed to be decided by election commission. Of course, सबसे पहला जो step होता है वो election commission decide करती है. So the first step is the election commission of India decides that which of them is the original or real political party. So the Uddhav Thackeray camp actually went to the Supreme Court. His camp actually went to the Supreme Court to say that it should not be, election commission should not be deciding it. But Supreme Court said कि let the election commission of India first decide this. So bench led by Justice BYJU'S rejected the Thackeray's camp plea to stay EC proceeding under election symbols reservation allotment order of 1968. So Supreme Court said that no, we are not going to stop the Election Commission of India's proceeding. Let the Election Commission of India decide who is the, you can say, the real faction. ठीक है, तो इसमें actually ये था कि basically Supreme Court ने ये कहा कि Election Commission of India यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को decide करने दो कि कौन सा real वाला शिव सेना है, मतलब कौन सी वाली, ये वाली कि ये वाली, ठीक है. उसके बाद अगर चाहेंगे तो लोग फिर कोर्ट में मूव कर सकते हैं. yes, after that if the people want then they can move the court again, है ना. So right now this has happened. अभी कोई judgment नहीं आया finally कि who is having the real faction. The Supreme Court has just said that let the Election Commission of India decide, है ना. Let's see, keep on following this news because it is it is related with anti-defection law. Even though it is a political article, but it is not purely political in nature. ये purely political नहीं कहलाएगा because it includes, it talks about anti-defection. So can anyone tell me in live chat which schedule of Indian Constitution talks about anti-defection law? Which schedule of Indian Constitution talks about anti-defection law? यानी anti-defection law के बारे में संविधान का कौन सा शेड्यूल बात करता है कि ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके, है ना. What is the right answer, guys? I'm waiting for your answers.
And everyone please press the like button. We are seeing only 14 likes, 38 is watching. So सबको फटाफट like button press कर दो. Yes, Stuti Mishra is right. Very good. यहाँ पर लिखा हुआ भी in fact. Here it is written. है ना? 10th schedule talks about anti-defection law. So Alka, Hariom, Khushi, Soni, Nancy, Agnihotri, Aditi, Ayush, Deswal, you all are right. So the 10th schedule talks about anti-defection law. ठीक है? So just have an idea about this. इसको follow करते रहिएगा because this news is important. Even if it is political article, but still it has things associated with Representation of People's Act, Constitution, 10th schedule, defection. इसीलिए पता होना चाहिए आपको. ठीक है? Yes. Okay. Yes. 10th is the right answer. So that is what it is being discussed here. So later in Gandhinagar, Chief Election Commissioner Mr. Rajiv Kumar, who is the Chief Election Commissioner of India, told press person that Election Commission would follow the laid down procedure while deciding on the matter. So the Chief Election Commissioner of India said that we will be following all those rules to find out, or can say to pass a judgment who is the actually the real Shiv Sena. ठीक है? तो Chief Election Commissioner यानी जो केंद्रीय चुनाव आयोग के जो हेड होते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग सारे रूल्स को फॉलो करेंगे और उस हिसाब से जो भी सही होगा वो हम लोग फैसला देंगे कि कौन सा सही शिवसेना है, मतलब कौन सा वाला रियल है. ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. तो ये सेकंड हाफ है द हिंदू का. ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट आई कुड फाइंड. फाल्के अवार्ड फॉर आशा पारेख. आई होप यू आर अवेयर. शी इज वेरी फेमस, कैन से फ्रॉम वेटरन एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड. आशा पारेख to be given दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2022. सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत मशहूर अवार्ड है 2020 का. वो आशा पारेख को दिया जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया और ये अवार्ड 68 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगा, उसी में दिया जाएगा. ओके, सो इट सेज दैट आशा पारेख विल बी गिवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 in the same ceremony of 68th National Film Award. Whenever 68th National Film Award will happen, actually it will happen on 30th September. In the same ceremony, Dada Saheb Phalke Award 2020 would be given. So just have an idea about it. Now there is a question for you because we are talking about Ministry of Information and Broadcasting. So the question is, who is the Minister of Information and Broadcasting? Your options are Prahlad Singh Patel, Mansukh Mandavia, Jyotiraditya Scindia, Anurag Thakur. So what is the right answer to this question? Similar questions was asked in CLAT 2021. I hope you are aware that last year also ministry was asked that who is the this minister. I mean they had asked about health ministry, right? So similarly you should be knowing, yes, Hariom, Nancy, Sakshi, Ayush, Priya, Khushi, Debarita, Neha, Preeti, Shreya, Aditi, Nandini, you all are right. I cannot take everyone's name. So the right answer is Mr. Anurag Thakur is the Minister of Information and Broadcasting. In fact, यहाँ पे लिखा हुआ भी, if you see it carefully, right? So that is why you should be knowing these basic things, है ना? So Mr. Anurag Thakur from 7th July, since 7th July last year, he is the Information Broadcasting Minister. Okay, just have an idea about it. Everyone, please press the like button. We are seeing 22 likes, 45 is watching. सबको like button press कर दो, everyone. Yes. Now let's move on to another thing. Yes, actually let me show. Here there is an article and there, let me change the pen color. Yes, here also actually this is a photo. This is actually the Surya Kiran aerobatic team of Indian Air Force. It was performing something actually, performing at an air show in Assam government in Guwahati, hai na? So that was a just photo, so I have just showed you. Okay, now the next one is this one, government app to capture data on groundwater levels. That is important one. Okay, I hope you are aware that yes, there is a problem of groundwater issues, the shortage of groundwater, etc. in different places, and there are a lot of things like, for example, people say perhaps it is because of overuse of water for irrigation purpose, yeah, misuse of water sometimes for irrigation purpose. Agriculture requires a lot of water, so sometimes a lot of useless waters are being used. Then overuse of chemical fertilizer, etc. And there are a lot of reasons why groundwater levels are getting affected. And for that, the government has actually, with the rapidly declining water table threatening to push many regions into drought, Union government on Tuesday launched Jal Doot app, jointly developed by Rural Development Ministry and Panchayati Raj Ministry to monitor ground levels. Okay, so this Jal Doot app will be helpful in
to capture data on groundwater tables. जो जमीन के अंदर पानी होता है ना, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, उसकी पानी कई जगह कमी देखने को मिली। उसका कारण शायद ये है कि बहुत ज्यादा फार्मर्स या एग्रीकल्चर ये बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा यूज हो जा रहा है, जिसके कारण पानी जो जमीन के अंदर पानी होता है उसकी कमी आ रही है। तो उसको मैप करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, उसके लिए सरकार ने एक जल दूत ऐप बनाया है। कौन सी दो मंत्रालय मिलकर के, एक है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यहाँ देख सकते हो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायती राज मिनिस्ट्री ने मिलकर ये ऐप बनाया। ओके, यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, नाउ यू कैन सी इट हियर। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेने का, नो नीड टू गो मच इन डिटेल, बट जस्ट हैव एन आइडिया। सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ठीक है ना, measures groundwater levels in November actually. So you can see it here, 3 major states where water level increased. So Tamil Nadu, Karnataka and Telangana water level had increased, ठीक है। और कहाँ डिप हुआ है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इस 3 जगह वाटर लेवल डिक्रीज किया है। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, बेसिक है ना। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट गाइस, एंड दैट इज from 23rd September till 2nd October we are running a all India mega mock for CLAT 2023. So please do join it and attempt the entire test. We have got some news ki people attempt half test, आधा test attempt करते हैं, आधा छोड़ देते हैं. Please do not do that. That will be very very beneficial for you. Think it like this, that this is actually a real exam. Attempt like a real exam. That will be very very beneficial for you. ठीक है? Yes. Now let's talk about editorials. So these are the 4 articles actually. Let's first discuss the above half. Here, this is an article related to UN Security Council permanent membership. In fact, yesterday also we had something discussed about it. कल भी हम लोगों ने UN Security Council की permanent membership से related एक article discuss की थी. So Mr. Chinmay R. Gare Khan has written about it. So basically these are P5 members. I hope you are aware. So and these are non-permanent members, so they are getting elected again and again. Now they have these P5 have veto powers, etc. Now India, so he's talking about India's chance of getting into P5. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है इसी पे बेस्ड है कि भारत जो है वो P5 में आएगा नहीं आएगा, क्या संभावना, इसी से रिलेटेड है। Now so let's discuss about this, what he has written. देखो, he is actually former permanent representative of India to United Nations. तो ये खुद जो है डिप्लोमेट रह चुके हैं, ठीक है। Now there's a buzz in India about prospect of country becoming permanent member of UN Security Council. India's external affairs minister has been actively canvassing for the country's candidature, meeting his counterparts from several countries. तो वो ये बता रहे हैं कि आजकल ये काफी न्यूज में चल रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का शायद इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए, उसके लिए फॉरेन मिनिस्टर कई जगह जा रहे हैं, कई लोगों से मिल भी रहे हैं, ठीक है। सो ही सेइंग दैट देयर इज अ न्यूज दैट इज कमिंग इन, मींस देयर इज अ बज, मींस people are believing that perhaps we will get the permanent membership of UN Security Council. Okay, so the 5 permanent members he has highlighted is, I hope you are aware, China, France, Russia, US, UK. तो पता होगा. So until a quarter century ago, nuclear weapon club had 5 members, the same 5 as P5. But now India, Pakistan, North Korea, Israel also joined the club. The P5 could do nothing to stop the later countries from forcing themselves into the membership of nuclear club, etc. तो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले actually he is talking about 1967. एक treaty signed with the nuclear proliferation treaty. We are not going in detail. But till 1967, 1st January, there were P5 nations. And these P5 nations were called as nuclear weapon states because only these 5 nations had nuclear weapons. But later on, other nations have also developed, like India, Pakistan, North Korea, Israel also. ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि 1967 तक, एक्चुअली उन्होंने ईयर नहीं लिखा है, लेकिन वो 1967 में एक्चुअली एनपीटी साइन हुआ था, इसी से रिलेटेड बता रहे हैं। 1967 से पहले एक्चुअली क्या हुआ था ना कि P5 नेशन ही के पास न्यूक्लियर वेपन था। बाद में और सारे मुल्कों ने बना लिया, जैसे इंडिया ने, पाकिस्तान ने, नॉर्थ कोरिया ने, इसराइल ने, और P5 कुछ कर नहीं पाया खास, मतलब अदर P5 नेशन कुड नॉट डू टू स्टॉप दिस, है ना, बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिवली नहीं कर पाए। द इनएस्केपेबल फैक्ट इज दैट नन ऑफ द P5 वांट्स, फिर एक्चुअली देखो कुछ लाइन स्किप किया मैंने बिकॉज आई कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट वंस हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जगह से एक जगह कहा, द ऑथर हैज सेड, मिस्टर चिन्मय आर गारे खान, that the inescapable fact is that none of the P5 wants UN Security Council's rank to be increased.
one or the other of them might have some noise about supporting one or more of the aspirant. Each is confident that someone among them will torpedo the enlargement of the club. Declaration of support for India's candidate need to be taken with a fistful of salt. इनकी ये राय है कि कोई भी P5 नेशन शायद नहीं चाहेगा कि कोई और मेंबर जो है वो P5 में आ जाए, नहीं P5 से P6 या P7 इस तरह बन जाए और उनके पास परमानेंट मेंबरशिप हो जाए। हालांकि कुछ लोगों ने किसी कंट्री को सपोर्ट किया, जैसे रिसेंटली रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है, लेकिन वो भी बहुत कम ही चांस है कि वो हो पाएगा। सो उन्होंने क्या कहा कि इसको इतना सीरियसली नहीं रहना चाहिए। दैट इज व्हाट हिज ओपिनियन इज। ओके, सो दैट इज व्हाट ही सेज कि लेट्स से देयर आर P5 नेशंस, तो कोई ना कोई तो ब्लॉक कर ही देगा। लेट्स से इंडिया वांट्स टू कम, सो मे बी द चाइना विल ब्लॉक इट बिकॉज वी नीड द support of all those 5 and 2/3 majority from UN General Assembly etc. So it's very difficult to believe कि China will allow, so China will use veto against India कि India should not be allowed or something like this. तो यही बता रहे हैं कि probability बहुत कम लगती है शायद इसकी कि we will get this. But let's see. In fact कल जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस किया था yesterday, so this also talked about very premature to comment on India getting a UN Security Council veto. इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर हिमसेल्फ हैड सेड, तो जो इंडिया के भारत के विदेश मंत्री उन्होंने खुद ये कहा था कि अभी हम लोग इतना जल्दी इस मतलब कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए, इस बात पर ना पहुंच जाए कि हम लोग को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो यानी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। अभी हम लोग मतलब ध्यान रखें, इतना जल्दी मतलब कंक्लूजन में पहुंचने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट यू सेज व्हेन डेलीगेशन ऑफ 50 कंट्रीज वर ड्राफ्टिंग द चार्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशन, द आर्टिकल रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल एटसेट्रा, द राइट टू वीटो वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रोवर्सी। तो यही बता रहे हैं कि जब वीटो का कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनली बनाया जा रहा था 1944-45 में, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी में हुई थी वीटो के मामले में। ठीक है, सो द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, द डिबेट हैपेंड एक्चुअली दैट हु शुड गेट वीटो एंड ऑल एंड वेदर देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीटो और नॉट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। देयर इज कंसिडरेबल अनहैप्पीनेस अमंग मेंबरशिप एट लार्ज इन द यूनाइटेड नेशन अबाउट राइट ऑफ वीटो। बहुत सारे लोग एक्चुअली ऑफ कोर्स P5 के अलावा बाकी बहुत सारे नेशंस जो है नाराज भी हैं, एंड द डिबेट अबाउट वीटो इज ऑलमोस्ट रेग्ड अप व्हेन द वेस्टर्न मेंबर्स ऑफ द P5 क्लब आर नॉट एबल टू हैव देयर वे बिकॉज ऑफ रशिया एटसेट्रा एंड ऑल। अब देखो ऐसा कहा जाता है ना कि देखो रशिया एंड चाइना आर ऑन वन साइड, P2 प्लस P3 में डिवाइड हो गया है, सो दीज 3 आर ऑन वन साइड एंड दीज 2 आर ऑन द टू साइड्स। सो वेस्टर्न नेशंस लाइक P3, जब US UK वांट्स टू पास एनी रेजोल्यूशन देन चाइना एंड रशिया ब्लॉक्स इट। ठीक है, when China and Russia want some resolution then they blocks it। तो एक्चुअली ये P5 जो है ना P2 वर्सेस P3 हो गया है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यूज दीज वर्ड्स कि इट हैज बिकम P2 वर्सेस P3 एंड ऑल, यही उसी की बात कर रहे हैं। सो इनफैक्ट वो ये बता रहे हैं कि चाइना रशिया के केस में भी, जैसे रशिया ने भी ब्लॉक कर दिया रशिया यूक्रेन इन्वेजन में, सिमिलरली वेस्ट वालों ने भी जब अपार्थीड रेजिम थी साउथ अफ्रीका में तो उसमें सैंक्शन देने से इनकार कर दिया था। ओके, इज इट क्लियर, यू अंडरस्टैंड? सो ही इज सेइंग दैट दे आर नो सेंट्स, मतलब है कि यूएस यूके वाले भी, he means to say according to the author, he means to say कि all the nations they work on their own national interest. So in many cases the China and Russia have blocked, in many cases these P3 nations have also blocked resolutions and all। इसी को उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, yes Noah Joshi, बहुत ज्यादा फुल इंपॉर्टेंट यूजफुल नहीं होगा, आई विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक है, सो रशिया हेल्प, फिर एक्चुअली व्हाई एक्चुअली देखो यहाँ पे देखो ना, लेट मी शो, रशिया एक्चुअली रिसेंटली टॉक्ड अबाउट मेंबरशिप और परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया। तो एक्चुअली क्या बता रहे हैं, ही इज गिविंग सम एग्जांपल्स हाउ रशिया वाज हेल्पफुल इन इंडिया। सो ड्यूरिंग 1971 वॉर ऑन कश्मीर इशू एटसेट्रा, जनरली स्पीकिंग रशिया हैज सपोर्टेड इंडिया इन द हिस्ट्री। अगर आप पीछे भी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो सपोर्ट किया है रशिया ने इंडिया को। नाउ G4 is very much in the news. I have told you India, Japan, Brazil and Germany, and I gave you the homework yesterday. Okay, go and find out what is the work of G4. How many of you have answered it? किसी को पता है what is the work of G4? अगर नहीं पता है तो again this is homework. Today also I will not be explaining what is G4. इसका मकसद क्या है? What is the intention of G4? Go and find out. And now let's talk about, yes, there is a request guys, everyone please subscribe to our channel also. Subscribe कर दो, please press the like button, share this video etc. Now there is a quite debate about whether aspiring members should accept permanent membership without right of veto.
अब देखो जैसे नेहा जोशी ने सवाल पूछा कि सर क्या वीटो के बिना काम चलेगा? देखो उसमें क्या होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years, हर 2 साल के लिए इलेक्ट हो रहे हैं. सो अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी विदाउट वीटो, इफ these nations or other nations get, let's say India get permanent membership without veto, so India is not supposed to fight election again and again. तो वो चीज आसान हो जाएगी ना कि बार बार इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा. हालांकि अगर वीटो नहीं मिलेगा तो वो वाली बात नहीं रहेगी. यस, हाँ, yes, G4 is right. G4 people are writing their main intention is to get actually membership in UN Security Council or permanent membership in UN Security Council. Right. Devadita, Shubham, you all are right. ठीक है, हाँ, correct. So that is why he's saying कि some people say कि okay, there can be one more solution. If they are not accepting for veto, then at least give us permanent membership, so that we don't need to fight election again and again. बार बार इलेक्शन वगैरह लड़ने का झंझट नहीं हो. फिर ये सेइंग कि देखो एक्चुअली जो चार्टर है, यूएन चार्टर चेंज करना बहुत मुश्किल है. यू नीड 2/3 मेजॉरिटी इन यूएन जनरल असेंबली, देन परमिशन फ्रॉम ऑल P5. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि सारे P5 परमिशन दे दे कि इंडिया को या किसी और को आने दे. वहां मुश्किल लगता है बिलीव करना. दैट इज व्हाट ही सेज, है ना. मतलब एक आइडिया ये है कि changing the membership requires amending charter. This involves 2/3 of the total membership, including concurrent votes of P5. This means that each of the 5 has a veto. Charter was amended once in 1960s to enlarge council of additional non-permanent seats. बस एक बार जो है यूएन चार्टर को या यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज किया गया 1960 में. अदरवाइज इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना एक्चुअली. हाँ, yes everyone please press the like button. We are seeing 31 likes, 46 is watching. So सबको एक बार फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो. हाँ, that is what is being talking about. फिर उन्होंने ये कहा है कि some experts believe that India should not accept permanent membership without right of veto. We cannot accept second class status. तो कुछ लोगों का ये ओपिनियन है, कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट का, कि अगर इंडिया ने परमानेंट मेंबरशिप ले लिया और वीटो नहीं लिया तो एक तरह से सेकंड क्लास का स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, नहीं लेना चाहिए. बल्कि कुछ लोगों की राय है कि नहीं, ले लेना चाहिए. ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है. दैट इज व्हाट इट इज, है ना. So basically that is what the entire article was focused on, India, whether India should be getting or not getting permanent membership in UN Security Council. ठीक है. So he is actually skeptical. अभी भी मतलब थोड़ा skeptical है. मतलब उनके हिसाब से ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाएगा UN Security Council का. वो लोग अलाउ करें P5 नेशन और 2/3 UN जनरल असेंबली से पास हो, थोड़ा मुश्किल लगता है. That is what I can say the conclusion is. Now let's talk about, read carefully. Basically, I hope this editorial is talking about 45 videos being removed from 10 YouTube channels, है ना. 45 वीडियो को 10 YouTube चैनल से हटाया गया था because there is some sensitive material or something which could affect the security etc. of India and all. ठीक है. So that is what is being talked about, like the cases were sensitive, referring to Kashmir, Agnipath, false claims etc. about etc. and all. So that is what is being discussed. तो पूछा इसमें ये जा सकता है कि एवरी क्लास संडे से थर्सडे क्लास चलती है रजत यादव. हाँ, इसमें ये पूछा सकता है मेन चीज की, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट गिव्स गवर्नमेंट द पावर टू रिमूव दिस कंटेंट. तो कौन सा सेक्शन पावर देता? तो यहाँ पे सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट गिव्स गवर्नमेंट द पावर टू ब्लॉक द कंटेंट, एंड इट वाज इन फैक्ट upheld by the Supreme Court. But Supreme Court said that only after that rules provided a procedural safeguard, that the rules provided procedural safeguard including need to issue notice to the originator or the intermediary before being blocked. तो इसमें ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया था कि सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट सही है, लेकिन अगर किसी का कंटेंट ब्लॉक करना है तो पहले उसको आप, जो ओरिजिनेटर यानी जो यूट्यूब वीडियो बना रहा है, उसको आप नोटिस भेजिए पहले. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, that section 69A of IT Act is valid, okay, but whenever government is banning some content, it should ensure that the originator or the content maker should get the notice that yes, your content is being blocked because of this reason, and so that he or she should avoid in future making such content, है ना. Okay, is it clear? Yes. Now let's move on. Then latest order invokes Information Technology Act, intermediary guidelines and digital media ethics rules. इतना तो ये वाला रूल्स को इन्वोक किया गया. लास्ट ईयर जो रूल्स बनाया गया था, इट वाज अ प्रोसीजर बाय व्हिच एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कंसीडर्स कंप्लीमेंट एटसेट्रा एंड ऑल. इसको आप पढ़ लीजिएगा. यू कैन गो एंड रीड इन डिटेल अबाउट द नुआंसेस ऑफ दिस, है ना. यस, रजत यादव फ्रॉम संडे टू थर्सडे 11 AM in the morning. यस, हाँ.
Okay, now the government which discloses how many videos, तो ये author का opinion है. Here it is the opinion of the Hindu editors which say that they must reveal the outcome of such reviews if any. India ranks quite high in list of countries that make regular requests for removal of online content. तो उन्होंने ऑथर ने ये लिखा है कि इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री में से जो कि रिक्वेस्ट करता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि कंटेंट हटाने के लिए, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक्सेट्रा. तो जो ऑथर की ये राय है कि उनको ये रीजन ही बता देना चाहिए कि क्यों, मतलब मस्ट ऑल्सो रिवील द आउटकम ऑफ सच रिव्यूज इफ एनी. तो उसका क्या रीजन है, मतलब डिटेल थोड़ा सा है ना, जो रिव्यू कमेटी का जो ओपिनियन है. ओके, सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज एंड ऑल. Now, so this is okay. There's a small announcement. I hope you are aware that from 2nd October on our YouTube channel, every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday at 9 p.m. we'll be running a revision series. So please subscribe to our channel. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Please press the like button, share this video, subscribe to our channel. And from 2nd October, Monday, Wednesday, Friday, Sunday at 9 p.m. we'll be having a crash course type thing on YouTube. This channel. ठीक है? Okay, now let's talk about these two articles. Energizing India-Nepal ties, hydropower way, और ये वाला है Indian cricket से related. So let's talk about this. So basically, he is actually senior consultant ICCR, Ministry of External Affairs. So let's discuss about what he is discussing. बहुत detail नहीं जाना इसमें. Basically, he is talking about hydroelectric power. Hydroelectric power आप समझते हो, जैसे पानी से जो बिजली बनता है, जैसे डैम से वगैरह से है ना, डैम के नीचे है ना. So that is what is being discussed. So now he is saying कि Nepal signed an MOU, Memorandum of Understanding. MOU का मतलब क्या होता है? It's a sort of an agreement. एक तरह का agreement है. MOU मतलब agreement between NHPC, National Hydroelectric Power Corporation, to develop West Seti and Seti River projects. तो एक्चुअली क्या देखो, यहाँ पे सेती रिवर है, यहीं पे कहीं पे, दिस इज बिहार, ठीक है, और यहाँ पे नेपाल है, दिस वन. ओके, तो यहाँ पे सेती रिवर है, ठीक है. सो इसी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उसी की बात हो रही है, ठीक है. तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि अर्लियर इट वाज विद दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन टू चाइना, बट चाइना विथड्रू इट एंड नाउ इट इज अप टू द इंडिया टू मेक इट. ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली इसकी पूरा हिस्ट्री पे जा रहे हैं. Originally it was given to some other French company, then it was given to Australian company, then China company, etc. तो बहुत सारा पूरा डिटेल हिस्ट्री बता रहे हैं, उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है. Just have a basic idea that on Seti River, which is in Nepal, I can say Nepal moved to involve, Nepal is involving India to make this project make it successful, है ना. तो उसमें क्या है, तो that is what is being discussed. This will help India minimize geopolitical influence of China and firm its presence in Nepal. हाँ, एक चीज ये है कि इससे नेपाल की कुर्बत इंडिया से बढ़ेगी. सो इंडिया, नेपाल विल बिकम मोर क्लोज टू अस देन टू चाइना, बिकॉज इन रीसेंट ईयर्स वी आर सीइंग कि नेपाल वी आर बिकमिंग मोर क्लोज टू चाइना. जैसा कि हम लोग रिसेंटली देख रहे थे कि नेपाल जो चाइना के करीब जा रहा था, तो इससे ये फायदा होगा कि अब इंडिया की तरफ आएगा, है ना. दैट इज व्हाट वन आइडिया इज. नाउ ही सेज कि इंडिया में बहुत सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 70% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट से होता है. तो अगर इस टाइप के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाए तो इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल, राइट, व्हिच इज कंसिडर्ड एज मच बेटर देन थर्मल पावर, है ना. थर्मल पावर में क्या कोल यूज होता है ना, सो वी यूज कोल हियर. So coal is generally considered as bad because it causes pollution, it is non-renewable source of energy. So better it is, we should go for some renewable energy type thing like hydroelectric and all. So that is what is being talked about. सेती रिवर के बारे में बहुत डिटेल नहीं जाना, जस्ट बेसिक आइडिया अबाउट इट. थोड़ा सा गूगल पे आप जाके पढ़ सकते हो. यस मुस्कान, हाँ ठीक है ना. देन वो लास्ट में ये कह रहे हैं कि वी कैन कनेक्ट इट विद दिस BBIN इनिशिएटिव, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव. वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स. तो वही बता रहे हैं कि दिस आइडिया ऑफ दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कैन बी एक्सटेंडेड इन अदर कंट्रीज विद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एंड ऑल. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन शॉर्ट. चलो अब इसको देखते हैं. सिल्वर लाइनिंग एक्चुअली स्पोर्ट्स, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट स्पोर्ट्स. इतना डिटेल नहीं जाऊंगा. जस्ट हैव एन आइडिया दैट इंडियाज फ्लक्चुएटिंग T20 फॉर्च्यून्स जंप्ड अपवर्ड रिसेंटली अगेंस्ट विजिटिंग ऑस्ट्रेलियंस, और इंडिया ने 2-1 सीरीज से जीत लिया. आई थिंक यू नो बेटर देन मी अबाउट क्रिकेट, सो गो एंड रीड इट. दिस इज नॉट द थिंग व्हिच आई शुड एक्सप्लेन, you should read by your own. There's a request, guys. Everyone, please press the like button. We are seeing 34 likes, 43 is watching. Yes, it is important for India-Nepal ties. Yes, Anish Deshmukh. Yes.
हाँ, तो रिक्वेस्ट है सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, वी आर सीइंग 34 लाइक्स ओनली। देखो एक ये आर्टिकल थी ऑपेड पेज में और ओपिनियन पेज में, लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन। सो एनआईटी के एक प्रोफेसर, एनआईटी त्रिची के, और एक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, इन लोगों ने मिलकर के आर्टिकल लिखी है। सो बेसिकली बोथ आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनआईआरएफ रैंकिंग की पहली बात किया, एंड एनालिसिस ऑफ टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा, एंड प्रेजेंट्स अ डिस्क्वाइटिंग पिक्चर। मतलब एक्चुअली ये जो उनकी आर्टिकल है ना वो क्रिटिकल है एक्चुअली। मतलब उनका कहने का इन लोगों का मतलब ये है, बेसिकली देयर मेन आइडिया इज that the quality we are seeing the decline of engineering colleges, a lot of engineering colleges are getting opened with very lower quality, बहुत कम ही ऐसे quality education, like let's say IIT, NIT, Jamia, etc. There are some institution, NITs and all, and some like Birla Institute of Technology, BITS, Pilani, etc. But other than that, a lot of private engineering colleges are getting opened, which actually are of not high quality. तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही है इंजीनियरिंग के फील्ड में। सो उन्होंने मतलब कई सारे लोगों ने एग्जांपल दिया, जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, कैटेगरी, स्कोर एटसेट्रा, तो उन्होंने परसेंटेज वाइज करके बताया, इतना डिटेल नहीं जाना है। सो उन्होंने ये कहा है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कोई जॉब लगती है लाख्स में, कि उसको 40 लाख का जॉब नौकरी लग गया, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि यूएस के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन इंजीनियर गॉट अ जॉब इन यूएसए एंड इट्स 40 लाख पैकेज, तो लोग बोलते हैं वाह 40 लाख पैकेज यानी इंडिया के हिसाब से 3 लाख रुपए से ज्यादा है, बट वो यूएस के हिसाब से बहुत एवरेज सैलरी है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, that we need to clarify that these are US salaries and we translate it in India and we say look, this guy has got so much salary from our company. So that sometimes many private engineering colleges promote like this, that there's a package of 25-30 lakhs one has got, but see 25-30 lakh package in America, it is not equivalent to 30 lakh rupees in India, because they have their different standards than India. There is expenditure is very high, they have their high inflation as compared to India, है ना, वहां के हर चीज खर्चा ज्यादा होता है ना, वहां का 3 लाख पर मंथ, यहाँ का 3 लाख पर मंथ बराबर नहीं है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, these salaries could only be regarded as decent, but in India when we see कि हम लोग को लगता है कि इतना लाख और इतना करोड़ का पैकेज मिल गया। Then placement headlines are also rarely reveal that such offer are rare, limited only to minuscule numbers. हाँ, दूसरी चीज वही हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे अगर 100 बच्चा है, 100 में से ना 2 बच्चे को अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई, लाख में 20 लाख 25 लाख पैकेज मिल गया, 30 लाख, सो उसी को लोग हाईलाइट करते हैं, इसमें ये नहीं बताते कि 30-40 को नौकरी नहीं मिली। So basically saying that we highlight only few people who have got a very good package, but a big section of them do not get the job. So we only highlight their minuscule population, यानी बहुत कम तादाद है जिसको पूरा हाईलाइट किया जाता है हर जगह कि इतना ज्यादा उसकी सैलरी है, उतना अर्निंग है, करोड़ में पैकेज है, बट इफ यू टॉक अबाउट ऑल अदर कैंडिडेट्स इट्स नॉट द केस। तो बेसिकली उनकी आर्टिकल जो है ना इन दोनों की वो क्रिटिकल है कि क्वालिटी एजुकेशन इंजीनियरिंग में बहुत एक से गिर गया। उसका कारण ये है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, उसकी क्वालिटी है नहीं है तो भी खुल गया, जल्दी पैसा कमाने के लिए सब भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, है ना। सो उन्हें कह रहे हैं कि और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी नहीं है इंडिया में, है ना। देयर इज स्टेयरिंग एट अ डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन। इंजीनियरिंग कॉलेजेस कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट में पढ़ा दे, ठीक है ना। यानी अफोर्डेबल ऐसा है कि आम आदमी का बच्चा ही पढ़ ले, सो इवन इन अ कॉमन मैन कैन आल्सो स्टडी विद अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो डर्थ मतलब होता है लैक, है ना, डर्थ मतलब कमी, लैक कमी, तो क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन की कमी है। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस नाम के नंबर्स के बहुत सारे, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, सो दैट इज व्हाट बेसिकली परहैप्स दे आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट राइट, ठीक है ना, कि दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट can say, and there are many engineering colleges where the quality is of not that much. I'm not saying कि everyone is bad, because ये भी कहना सही नहीं होगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि सब बुरे हैं तो भी नहीं सही है, because there are quality education also. But वो ये कह रहे हैं कि बहुत कम तादाद में, परसेंटेज वाइज इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं कि उस हिसाब से कमी हो गई परसेंटेज वाइज, हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शॉर्टेज हो गई, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some few articles more. जैसे एक और आर्टिकल थी, सेंटर सेट्स गोल टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर्स इन सिटीज। पीएम, यू अंडरस्टैंड, पीएम 2.5, पीएम 10, दीज आर पार्टिकुलेट मैटर्स, है ना। तो सेंटर ने गोल सेट किया है ताकि पार्टिकुलेट मैटर्स को रिड्यूस किया सके, पोल्यूशन रिड्यूस करना है, स्पेशली दिल्ली में इफ यू सी अ लॉट ऑफ पोल्यूशन आर देयर एंड ऑल, है ना। फ्लड्स इन पाकिस्तान, आई होप यू आर अवेयर, इट हैज अफेक्टेड ह्यूज। इज इट ओके नाउ गाइस?
I think it's okay. We are sorry. I don't know. Something happened. Internet went off. Okay. Now, so let's move on. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के लाइफ में हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैट्यूट बेंच, देखो स्टैट्यूट बेंच एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कहते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले ऐसा लिखते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है लाइव स्ट्रीम किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक्चुअली देखो ये है इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है, यू कैन सी इट हियर। So because yes, you are from law field, so you should be knowing it. So these are the 5 judges, 1 2 3 4 5, है ना, आप देख सकते हो ये 5 जजेस हैं। So the main one जो बीच में बैठे थे वो हम लोग लिखते हैं ना कि बेंच लेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सो ये लेड बाय का मतलब होता है जो बीच में बैठते हैं, दैट इज यू कैन से लेड बाय, वी यूज द वर्ड, है ना। सो दीज आर द 5 जजेस, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जज होते हैं, एंड दीज आर द लॉयर्स। तो इसमें अब ये चीज बेनिफिट होगी, लाइक आई थिंक दिस इज कपिल सिब्बल, ही इज आर्गुइंग द केस एंड ऑल। सो बेसिकली जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बताई है कि वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अगेन देयर इज टेक्निकल इशू। ओके, सो वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी इफ देयर वाज एलिगेशन कि पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया वे आर अनेबल टू एक्सेस सुप्रीम कोर्ट, बहुत मुश्किल होता था इसलिए कि साउथ इंडिया में बहुत दूरी होती थी। अब ये कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहीं से भी कोई बैठा है ऑनलाइन तो वो जो है वो आर्ग्यू कर सकता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। और लोग भी देख सकते हैं, जनता देखेगी कि अच्छा कैसा होता है हियरिंग। लेट्स पीपल शुड आल्सो गेट टू नो हाउ द हियरिंग हैपेंस एंड ऑल, कैन। इज इट बफरिंग अगेन? Okay, now there was another article actually talking about Supreme Court reserves verdict against EWS reservation, यानी EWS reservation को जो चैलेंज किया गया है उसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। रिजर्व्स वर्डिक्ट का मतलब ये होता है कि अब हियरिंग कंप्लीट हो गई है, नॉट विल बी पासिंग एन ऑर्डर वेरी सून, है ना। नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ विल बिकम सीजीआई इन नवंबर, आई थिंक ऑन 8th नवंबर आई गेस, अभी है 1 महीना है, हाँ। Okay, now there is a question number 2, which we are talking about is who is the current PM of Japan? Yoshihide Suga, Fumio Kishida, Shinzo Abe, Xi Jinping. I'm very sorry, थोड़ा सा technical disturbance हो रहा है, I don't know, internet में there's some problem. जापान के current PM कौन है? I'm waiting for your answers. Everyone please press the like button, share this video, subscribe to our channel. Yes. The right answer is B, Fumio Kishida. Good. Muskan, Riya, Stuti, Debadita, Shubham, you all are right. So he is the current Prime Minister of Japan. I hope you are aware that recently PM Modi visited the state funeral of the former Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe. So he met actually Japanese Prime Minister also, Shinzo Abe. They're talking about free open Indo-Pacific की बात की हम लोगों ने, है ना। So that is why you should have a basic idea about it. उसके अलावा एक और पेज 14 में एक छोटी सी न्यूज थी बट इंपॉर्टेंट लगी। कॉलेजियम रिकमेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता टू बी द नेक्स्ट टू बी एलिवेटेड टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है वो उनको रिकमेंड किया गया कॉलेजियम के द्वारा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो अभी रिकमेंड किया गया, फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा, फिर प्रेसिडेंट जो है साइन करते हैं, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। Then arrival of foreign tourists took big hit in 2021. एक छोटा सा न्यूज था, of course you are aware of this because of COVID etc. The lockdown happened, disturbance happened, and because of which last 2 years we are having disturbance of tourist destination and all, है ना. So just have an idea. एक और न्यूज था, here sabotage suspected after leaks in Russia Europe gas pipeline. So basically इसमें ये था कि I hope you are aware that Nord Stream we have discussed so many times. So it got affected because of some leaks happened, कुछ leaks वगैरह हो गया था, so ये न्यूज में था. Then yes, एक छोटा सा एक और न्यूज था actually. USA is doing some deal with Pakistan on the basis of F-16 related. So India you can say made a strong objection to that. तो उसमें US ने कहा कि no, we are having good relation with both Pakistan and India. So India का US का पाकिस्तान इंडिया दोनों से अच्छा रिलेशन है, मतलब they tried to actually you can say cover up this matter and all. So that is what it was in the news. But just have an idea that yes, USA has done some deal related with F-16 with Pakistan and all. So just have an idea about it, okay? And India you can say made a strong objection to that. Indo-Pacific का मतलब होता है Indian Ocean और Pacific Ocean मिला करके region, okay? That's called as Indo-Pacific region, okay? So
Please download the BYJU'S exam prep app where you will get 45 plus mocks, unlimited access to 20 CLAT and 25 non-CLAT mock tests, 9,000 plus practice question, etc. and all. And you will get detailed mock analysis from our faculties also. And yes, I hope you are aware that from 23rd September to 2nd October, we are running a mega mock challenge. Please do join it, attempt the entire test. पूरा test attempt कीजिए, आधा नहीं attempt कीजिए, आधा अधूरा नहीं करना है. Subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, etc. Thank you everyone. Please press the like button, share this video and subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching.